हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग कास्ट सिस्टम्स को शुरू किए थे, कास्ट के बारे में। सो टुडे विल कंटिन्यू विद कास्ट। जब हम कास्ट को समझते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच जिसको आप कहते हैं एट्रीब्यूशनल अप्रोच, किस तरीके से कास्ट को डिफाइन करते हैं डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट, दैट हाउ इन टर्म्स ऑफ understanding the caste from Indian context by looking at Indian society, sociologists like G.S. Hure, J.H. Hutton, and how do they define the caste systems through the significant features given by them. जैसे Hutton ने Charles Hutton जो caste in India, that how the central features of the caste system is endogamy, and that gives idea of the restrictions and taboos. जो taboos जो restrictions की बात करते हैं, that to understand the caste systems, and that becomes the part of the attributional approach to understand the caste analysis. तो ये जो characteristics है कास्ट को समझने के लिए, वो जीएस घुरे या हुटन या एमएन निबास, ये सभी लोगों की जो कास्ट को समझने के जो प्रयास है, and that becomes the part of the endogamy nature, the restrictions and taboos are created to understand. So there is also an interaction that various caste कैसे interact करते हैं, they do not violate these restrictions. जिस तरीके से जो restrictions बनाया गया है कास्ट को लेके, वो violate नहीं होता है. They are part of their own norms attached to their own caste. तो हम लोग अपनी अपनी कास्ट से जुड़े हुए जो norms, जो sanctioned values create किया गया है, वो उससे हम बाहर जाके बात नहीं कर रहे हैं. और interactions, our communications, our the role is also important to understand how we have established that relationship. Then the caste system is seen by Hutton, who says that there is a taboo. Taboo means restrictions, the taking food, cooked food from other than their own caste. जब आप अपने कास्ट के अलावा दूसरे कास्ट से पका हुआ खाना क्यों नहीं लेते हैं, that is part of understanding the caste. That how the idea of pollution attached to the taking lower caste food, cooked food, is become a problematic conditions for the higher caste. And it is here the Hutton says that the restrictions is not about only marriage, it is also part of the commensality. साथ बैठ के खाना नहीं, साथ उनकी बना हुआ भोजन को higher caste खाएगा नहीं या टच नहीं करेगा. So this is here the idea of caste as a relationship, understanding that how caste creates the idea of taboo or restrictions on the basis of the food behavior. M.N. Nivas also chooses to study the structure of relations arising between the caste on the basis of these attributes. So ये जो M.N. Nivas की ideas है caste systems को लेके, that how the caste identity became an important issue to understand Indian society. That caste के साथ जुड़ा हुआ जो पहचान है, जो उसकी अस्मिता है, वो caste system के साथ अपनी खान पान, रहन सहन, इंटरेक्शन, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करता है. जब आप इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, देन यू फाइंड दैट हाउ द आइडिया ऑफ कास्ट इज अंडरस्टूड इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस, दैट उनकी जो रैंक है, वो रैंक एक दूसरे को समझने के लिए हाउ कास्ट आर वर्किंग. जब आप कहाँ पर हो समाज में, अपने गांव में, अपने एरिया में, किस पाव में हो, किस सीढ़ी में हो, कहाँ पे आपकी पोजीशन है, वो जो रैंक को समझने के लिए यू अंडरस्टैंड दैट हाउ द कास्ट वर्क्स इन द इंडियन ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर. तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू वैली, जो एफजी वैली की स्टडी है, एंड हाउ ही गिव्स द आइडिया ऑफ कास्ट डायनामिक्स एंड आइडेंटिटी आर यूनाइटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड हायरार्की. तो यहाँ पे जो हायरार्की क्रिएट करता है और सेग्रीगेट डिफरेंशन क्रिएट करता है, that is part of the caste systems. So caste is not looked at only the functional perspective, which symbolizing that we create a orderly society. It is going beyond that. So you are creating a segregations, you are creating a hierarchy, and that is also part of the caste dynamics. Then it is also important to understand that caste stands in ritual and secular hierarchy expressed in the rules of interactions. तो यहाँ पे जो रिचुअल और जो हायरार्की, जो रिचुअल मानते हो, सेकुलर मानते हो, वो सारे चीज को खाली कास्ट से नहीं, कास्ट से जुड़े हुए
उससे जुड़ा हुआ इकोनॉमी, पॉलिटिकल हायरार्की की बात भी करता है, उस पे रिलीजियस सिस्टम्स की बात करता है. सो कास्ट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजियस सिस्टम. तो दैट मीन्स ये जो हायरार्की है कास्ट से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ इकोनॉमिक कंडीशंस भी क्रिएट करता है हायरार्की, उससे जुड़ा हुआ पॉलिटिकल हायरार्की भी, और रिलीजियस जो रिचुअल से लेके वो भी हायरार्की क्रिएट करता है. सो ये जो रिचुअल सिस्टम्स दैट इट हैज ए ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, और जी वैली जो बीसी पड़ा की स्टडी उन्होंने उड़ीसा में किया था 1957 में, that that how the caste systems is creating the upper caste creating a dominant political and economic system of village. So that is also created, that how the land owning systems, how the land ownership is also creating the caste configuration, caste situations. So caste यहाँ पे जमीन में भी जुड़ा हुआ, गांव की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, गांव से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक कंडीशंस को भी शो कर रहा है. सो दिस इज हियर that how the Kshatriyas, that when it became part of the land owning systems, तो ये जो इंडिपेंडेंस के बाद उनकी जमीन सब चला गया बिकॉज ऑफ दैट द कास्ट सिचुएशन चेंज्ड. तो ये जो कास्ट सिचुएशन के साथ जमीन और जमींदारी प्रथा या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम्स जो विलेज के लेवल पे, वो भी कास्ट को एक्सप्लेन करता है. सो दैट मीन्स this caused a downslide in their ritual ranking as well. There is a clearly discernible change in the interaction patterns, such as acceptance and non-acceptance of fruit from other castes. So caste system से जुड़े हुए जो food habits, food behavior, वो भी rank से, ritual से जुड़ा हुआ, जो एफजी वैली अपने स्टडी से, विशी पड़ा की स्टडी से बताता. Then vacuum merit, जो merit की जो स्टडी था, that how caste ranking, there is an arrangement of caste ranking in ritual interactions, that how the ritual hierarchy itself has a relationship with economic and political hierarchies. तो ये वही चीज that किस तरीके से स्तरीकरण, आर्थिक और राजनीतिक स्तरीकरण भी कास्ट स्तरीकरण के साथ एक रिलेशंस को दिखाई देता है. देयर इज ए कोइंसिडेंस that you are higher level of economy, higher level of political rank, so that gives clear significance that you are from higher caste hierarchy. So your rank, political, economic rank is also synonymic to the idea of caste dominance, या upper caste, या higher caste. So that's is to say that both ritual and non-ritual hierarchies affect the ranking in the caste order. So the ritual hierarchies tend to play a greater role. So क्योंकि जो कास्ट से जुड़ा हुआ रिचुअल्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपसे जुड़े हुए जो वैल्यूज, कास्ट से जुड़े हुए जो नॉर्म्स है, वो आपकी रैंक के साथ जुड़ा हुआ, और वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन को भी डिस्क्राइब कर रहा है. Then when we study Louis Dumo, then Dumo added the new dimension, that how the idea of caste has a relationship with interaction perspective, that how the idea of caste and identity becomes part of the entire these caste systems. That for Dumo, caste is about inequality, caste is about hierarchy, and that becomes part of the Hindu traditions. And to understand the caste is not equality, it is giving an unequal Hindu society. Thank you so much for watching Dhalsar classes. Thank you.